अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। लास्ट एपिसोड जो हमने खेला था वो उसमें हमने गार्डनिंग करने सीखी थी। हमने उसमें कोई पौधे हमने उगाए थे जो कि हमें आगे जाके हेल्प करेंगे या अटैक मान लो किसी पे अटैक करने में भी मदद करते हैं। और भी हैं प्लांट, अभी हम आहिस्ता आहिस्ता उसको भी सीख रहे हैं। तो अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं ऊपर भी दे दूँगा और आप डिस्क्रिप्शन पे भी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम आगे अपनी जर्नी। तो स्टार्ट करते हैं, फिर लोड करते हैं अपना गेम। तो हम आ गए हैं लास्ट जगह पे जहाँ हमने प्रैक्टिस करी थी, और हमने यहाँ पे क्या कहते हैं एक छोटी सी क्या कह सकते हैं स्पेल्स के वो इस पे हमने एक लड़ाई करी थी जिसमें हम लोग जीत गए थे, तो चैंपियन हो गए थे हम इधर के। तो आज हम शुरू करते हैं, हम देखते हैं हमारा क्या टास्क है। तो मेन्यू पे देखते हैं, हम इस पे जाते हैं। हमारे पास दो टास्क आ रहे हैं जिसमें एक तो था डॉज करने का, ये मुझे समझ आ गया है ये कैसे होता है, तो हम आहिस्ता आहिस्ता इसको भी करते जाएंगे। और दूसरा है ये हमें ये वाला, तो हम ये वाला करने जा रहे हैं। ओके, अच्छा और भी चीज़ें हैं इसमें, मैंने बाद में नोटिस करी थी। इसमें आप अपने स्पेल भी अपग्रेड कर सकते हैं, मेरे ख्याल से वो आगे जाके हो सकता है आए हमें। तो अभी हम चलते हैं। अच्छा, अब हमने ये सोचा है कि हम जो है क्या कहते हैं पैदल जाएंगे, क्योंकि रास्ते में भी हमें काफ़ी चीज़ें कलेक्ट करने को मिलती हैं, तो हम वो भी कलेक्ट करते हुए जाएंगे। और हमारा जो है एक टूर भी हो जाएगा पूरे हमारे हॉगवर्ड यूनिवर्सिटी का। आप चेक करिए बाहर का सीनरी। चलो Revelio. चेक करें, ये अब देख लें मैप में ज़रा है कितनी दूर। ओके, ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम आपको लेके चलते हैं वहाँ पे। रास्ते में कोई चीज़ होगी पिक करने की तो हम वो भी करते हुए जाएंगे। बाकी कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आपको गेम कैसा लग रहा है और आप उसमें और क्या देखना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मार्क आ रहा है। Revelio. तो ये क्या घर खुला हुआ है? ओ यस, खुला हुआ है। यहाँ से हमें पोर्शन मिला है, यहाँ से हमें चेस मिला है, और हमें कुछ ये कलेक्ट करने का आइटम। सही, चलो चलो, कोई तो फ़ायदा हुआ हमें यहाँ आने का। ये हमें बुक लेती हुई जाएगी कि हमें कहाँ जाना है। ज़्यादा दूर नहीं है, हम चलते हैं यहाँ से भागते भागते। चलो, यहाँ पे भी हमें फ्लेम मिल गया। इतनी दूर क्या कर रही हैं खातून हमारी? Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. They want something I found. I can't say. तो I can't say कर देते हैं अभी। I've never met Rookwood or Harlow. Perhaps they mistook me for another student. A bit odd. The two of them pursuing a Hogwarts student so intently. But whatever the reason, you were clearly in danger. For now.
it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us, which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll, and Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. I'm glad to hear it. This could be dangerous. Rookwood and Harlow are a dangerous pair on their own, and the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your चलो guard. हमें ये जगह मिली है नेटी हमें सपोर्ट करने को तैयार है मेरे ख्याल से इन जगह पे लूट हमें मिल सकती है ये एक हमें एक और टास्क मिला है ये लॉक है अभी ओके अच्छा हम ज़रा टूर कर लें एक फिर हम ज़रा देखते हैं कि हमें क्या करना है ये कौन है भाई साहब Jalal. Hello, sir. What do you sell here? Hello, I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. Any rumor about going out? Any whispers going about the town? There's a thief on the loose by the name of Katrin Haggerty. She's an ashwinder. She's stealing everything that's not nailed down, and people have had enough. Katrin's hiding in a camp just southwest of town. What do you sell? What do you have for sale? I sell only potions and their ingredients. If you can't fix it with a potion, then it's best left broken, I say. My ingredients are all local to this area, and my potions are brewed to keep you healthy and safe. Chalo, nothing come to mind. That will be all. Thank you for your time. चलो अब जाते हैं अपने टास्क की तरफ जो कि है इसके पार तो ये पानी में जा सकता है ओके पानी में भी नॉर्मल तरीके से चल रहा है नहीं यहाँ आके पानी ज़्यादा हो गया तो अब चला भी नहीं जा रहा चलो They must have come this way. Think! As the stranger I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be Enough out of you. Leave her alone. stupefied! Let's get this over with, shall we? I have things to do. Ha! As if... डॉज भी करना है याद रखना है क्योंकि हमें I'm a pork pie, क्या my कहते हैं वो टास्क पूरा करना है तो ये हम पे अटैक करें अच्छा वो टाइमिंग भी चल रही है Levioso. Incendio. अरे ज़ाया कर दिया आंटी ने हमारा स्पेल I'll watch the light go out of your eyes. ये कौन है भाई द कलेक्टर सेक्शन ऑफ द फील्ड गाइड हैज बीन अपडेटेड विद अ न्यू एनिमी टाइप ओके कोई नया एनिमी आया है I'm not going anywhere with you. Expulsion.
कहाँ गए अंकल? मर गए? आए क्यों थे? Incendio. Accio. Levioso. Lumos. Release me! Accio. Incendio. ये What on earth just happened? क्या मैं I've समझा वो never been मदद accosted करने in आया such a हमारी. manner, and so close to Hogwarts. Speak to the stranger. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders. Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. Research, how interesting. You're a researcher. Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. I thought the Merlin was a myth. I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were a myth. Mere myth. You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures. These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. How I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet. Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. चलो इनसे हो गई बात. यहाँ से ट्रेंड से हमें कोई चीज़ उठानी है. This trunk. Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. हमें लीफ मिल Lovely. गए. Now, notice the vines on these pillars here. Revelio. There's a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. अब हमें क्या करना है कि कुछ हमें टास्क आ रहा है. यूज़ किस चीज़ का यूज़ करना है. My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Solve the Merlin trial. Revelio. अच्छा ये चल रहे हैं. इनको क्या करें. स्पेल. Levioso. Accio. Incendio. Merlin's beard! ओके. The flames make the pyre sink. अच्छा ये और भी हैं. ओके. हो गए. Merlin's beard! How beautiful!
day. I can ये hardly क्या believe. चीज़ मिली है हमें? I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require Mallowsweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. 6 में से 3 है ये। हमें कोई नए चैलेंजेस हमारे सामने आए हैं। कलेक्टिबल्स में हमारे पास अच्छा ये सारी चीज़ें आ गई थी। हमारे पास ये पोर्शन है, टूल्स हैं, एनिमीज़ हैं, ठीक हो गया। चैलेंजेस में हमारे पास एक एक्सप्लोरेशन आई है। ये क्या है? एक्सपेंशन। अच्छा चलो ये भी कर लेते हैं। जो भी है वो आहिस्ता आहिस्ता करते जाएंगे, देखते हैं क्या है। और क्या है? कम्बैट आ गया है हमारे पास, जो कि अभी तक सारे लॉक ही हैं। नहीं, ये अलग खुल गया है। ये क्या है? अच्छा ये 5 करने हैं डार्क स्पेल यूज़ करके मेरे ख्याल से। चलो ये भी करते हैं आगे जाके। अच्छा अब देखते हैं हमारे पास क्या नया टास्क आया हुआ है। ये हमारा कहाँ तक हुआ है? 3 हो गए ना, 3 दफ़ा रोल किया था हमने। डिफरेंट चैलेंज है, डिफरेंट रिवॉर्ड। चलो हमारे पास आ गई है, एक लेटर आ गया है, देखें किसका है। द हंट फॉर द मिसिंग पेज। ओके, जो हमने वो निकाला था, क्या कहते हैं, जो लाइब्रेरी से हमने वो उठाया था, बुक जो उठाई थी, उसका एक पेज गायब था, तो ये उसके लिए है। तो हम उसको फॉलो करते हैं और पहुंचते हैं फिर हम उधर, देखते हैं किधर है वो। हॉगवर्ट के मैप में है, तो ये काफ़ी थोड़ा सा दूर है, तो हम कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट चले जाते हैं। अगर यहाँ पे कोई हमारा फास्ट ट्रैवल का है, तो यहाँ तो कोई भी नहीं है फास्ट ट्रैवल हमारे। तो करीब हमारे ये सारे अनलॉक क्यों हैं? चलो जो भी है अंदर तो जाएं, फिर देखते हैं क्या करना है। चलो चले, हम आ गए हैं अपनी सेंट्रल लाइब्रेरी की तरफ। ओके, अब हमें जाना है, हम उसको मार्क कर लेते हैं और फिर हम वहाँ पे पहुँचते हैं। चलो ज़्यादा दूर नहीं है, तो अच्छा है ज़रा अपना कॉलेज या स्कूल, जो भी स्कूल है हमारा, हम उसको ज़रा घूमते रहते हैं और भी चीज़ें देखते जाते हैं साथ साथ। एंटर करो। इसके लिए भी लोडिंग होगी, अभी एक साथ ही एंटर का दरवाज़ा खोलते हुए चले जाते बाहर भाई। चलो आ गए हैं हम, यहाँ पे देखते जाएंगे कुछ है तो नहीं कलेक्ट करने के लिए। चलो रात हो रही है वैसे। ये क्या है? Incendio. चला देते हम, दोनों तरफ जल गए। अब इंटरेक्ट करते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। चलो, हो सकता है बाद में कुछ हो, उसका कोई फंक्शन हो।
खाते का कुछ है? चलो अभी कुछ नहीं मिल रहा, चलो चलो छोड़ो आगे बढ़ते हैं। नहीं, ये भी एक है। मेरे ख्याल से शायद ये घूम रहा है। ओके, ये कुछ पजल टाइप का है, ये हम बाद में देखते हैं क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं जब तक। Revelio. You can't imagine how inconvenient travel. कहाँ जाना है? ये जगह तो वो लग रही है जब अगर हैरी पॉटर देखा हो, जहाँ वोल्डेमॉर्ट की लड़ाई होती है लास्ट। जी हम अगर आ गए हैं दरवाजे से एंटर होके, अब चलते हैं ऊपर की जानिब। Hey, it's me, Gareth. Do you have a moment? इनसे बात करते हुए चलते हैं। Were you calling me, Gareth? I was. After you helped me with that Fupa feather and potions, I reckoned you might be just the person I need. You see, I have an idea for a fizzing Whizbee-inspired beverage, but I'm missing a key ingredient. I can't wait to see what you brew up. चलो देखते हैं You and क्या your किया। concoctions. I don't know how you come up with these things. It's a gift, truly. So, I suspect the key ingredient in fizzing Whizbees is dried billywig stings. I heard there's a store of them in Honeyduke's cellar. I'd get them myself, but my Aunt Matilda has her eye on me. Thinks I need to focus on potions class for a while, not for my own brews. I was hoping you could follow a secret passage to Honeyduke's cellar and grab a few dried billywig stings for me. I would happy to. Sounds simple enough. And who wouldn't want to go to Honeyduke's? Ah, brilliant. Thank you. The passage is hidden behind the statue of a one-eyed witch in the third floor corridor. Just tap it with your wand and say, Descendium. I'll see what I can do, Gareth. Fair enough. You shall be the first one to taste my newest brew if you can be of help. Perhaps I can convince a meat to help me with my potions homework. Get my aunt to loosen her reins a bit. ये भी कोई I'm going to टास्क get है, those कोई dried इन्होंने billywig पोर्शन stings for वोर्शन Gareth बनाया, if वो he's to हमें finish his चेक latest करना है कि क्या concoction. बनाया इसने। You there? Yes, you. I A wonder. one-eyed Find witch the statue statue of shouldn't the- be too hard to find. एक मिनट, यहाँ पे हमें कुछ मिला। किधर गया? Revelio. ये रहा। अच्छा जी, ये है स्टार्ट करना है, इन भूत से बात करनी है हमें। नेकलेस हेडलेस। You wanted to see me, sir? Yes, Sir Nicholas de Mimsy Porpington, at your service. Nice to meet you, Sir Nicholas. I know about the book you found and its missing pages. I may be able to help. Follow me, if you will. It's not too far. Wait, how do you know about the book? And that it's missing pages? Word gets around amongst the ghosts. You were spotted with Mr. Sallow in the restricted section. Don't worry, your secret's safe with me. चलो बुध हमें उस पेज की तरफ लेके जा रहे हैं जो कि हमने वहाँ से चुराई थी, और वो उसका पेज जो था गायब था। This may be a थोड़ा सा leap, तेज but चलने I में believe I know who ended up with those pages. I'd be happy to take you to him, if you'd be so kind as to perform a small favor for me along the way. चलो अच्छा भाई, साथ साथ हल्के हल्के चलते हैं। A small favor in exchange for getting those pages. Yes, it's nothing really. I'd be grateful if you could simply go into the kitchen and procure a little rotten roast beef. I beg your pardon. Roast beef. Rotten चलिए, roast कुछ beef. बदल बदल था। That is correct. Rotten roast beef. If one floats through it just right, one can almost taste it. Ugh. I suppose I can do that. But why me? It's simple, my young friend. My ghostly form cannot carry it. सही है भाई, वो उन्होंने बोला मैं क्यों, उन्होंने बोला
उठा नहीं सकते। अच्छा भाई, रास्ते में से फल वल खाते हुए चलते हैं, ताकत वाकत भी तो चाहिए होगी। ये जितने हल्के चल रहे हैं ना ये अंकल, इससे अच्छा तेज तो मैं ही चला जाऊं। धक्का दे दे इनको, चलो जल्दी। इससे देख के वो याद आ गया मिस्टर बीन वाला सीन, जब वो सीढ़ियाँ उतर रहा होता है और आगे जो हैं दो बुड्ढे बुड्ढियाँ उतर रहे होते हैं। Kind as to collect the roast beef, I shall explain everything else in due course. Revelio. Here we are. Tickle the pear and head on. Did you say tickle the pear? Yes, in the painting. I'll wait right here. Do try not to get in the way of the house elves. I'm already imagining sweet aroma of rotten roast beef. ओह, छुपा हुआ दरवाजा। तुम कहाँ चले गए चाचा? Revelio. चलो दरवाजे के अंदर I जाके never देखते हैं will क्या है। understand students. What could they Plenty of want? delicious food and what found themselves a bit peckish likely. Certainly how makes hungry Rookie's growing job humans easier. can get. Here's a welcome अभी treat. क्या खाने की चीज़ें मिलनी है? रोटन रोस्टेड ब्रोस्ट हमें ढूंढना है किधर? ये खुलता है। अच्छा, हमें कोई बीफ ढूंढना है जो कि There's a disgusting पक चुका है smell. ज़्यादा। I must be getting ये रहा। close. चलो एक ही था, एक ही है। Oh, a student! What a treat! What can Finky get for you? A pumpkin pasty? Perhaps some Welsh rabbit? Sounds lovely, but what I really need is this rotten roast beef. Ah! Nick sent you, didn't he? Please help yourself. Finky supposes Nick's tired of loitering about simply to experience the faintest memory of the taste of food. Do you enjoy the food here, or you restricted to certain food? You don't mind student in here? Is it all right for students to wander into the kitchens? Well, since you asked, students aren't supposed to be in the kitchens, but Finky doesn't mind. There's nothing that lifts Finky's spirits more than the company of students. We so rarely get visitors, and we have plenty of treats. Come back any time you please. हाँ भाई, इन्हें अंदर आने की इजाज़त मिल गई है। चलो थैंक यू करते हैं और निकलते It हैं। was nice to meet you. Thank you for the beef. Happy to help, and to meet you as well. Please give Nick Finky's regards. चलो वापस उन भूत के पास चलते हैं, निकोलस के पास। There's nothing like a meal prepared by a house elf. ठीक है। Finky keeps all us house elves in line here in the kitchen. It's all right. She's the kind-hearted sort. नॉर्मल बातें हैं, चलो छोड़ो, It आगे smells बढ़ते हैं। glorious in here. ये रे भाई। Ah, you're back. No trouble, I take it? Not at all. Finky sends her regards, along with the rotten roast beef. Ah, glad to hear it. Kind elf, Finky. Now, let's get that beef to Sir Patrick Delaney Podmore, and you'll be one step closer to finding those pages. This is all rather cryptic, Sir Nicholas. What's going on? Terribly sorry, I'm getting ahead of myself. Sir Patrick organizes the Headless Hunt, a group of headless ghosts who gather for various, headless activities. Headless activities? Yes, you'll see. Anyway, I don't know how, but a member of that hunt, Richard Jackdaw, had the pages when he was alive.
My plan is to take the rotten roast beef to Sir Patrick so that he'll allow me, us, to engage with the hunt and speak to Jackdaw. Shall we? The roasted bros wasn't for you. What will I do when we get there? Is this dangerous? पहले ये पूछ Is the लेना। headless hunt dangerous? Oh, the headless hunt wouldn't hurt a fly, let alone a student. Just a group of fun-loving headless ghosts. अच्छा चलो हम चलते हैं आगे Very ज़्यादा well. सवाल किए बगैर। I'd like to meet Sir Patrick myself and see this headless hunt. Ah, wonderful. You won't regret it. पहले इसके लिए लेकर आना था, अब कोई पैट्रिक हैं, अब उनको ले दे के आना है ये, फिर वो हमें बताएंगे कि हमें अब कहाँ जाना है। अभी भी हमें कोई क्लू पूरा प्रॉपर नहीं मिला है। Do stay behind me. It's Sir Patrick we want. Oi, Nesta, look who's here. What have we told you, nearly headless Nick? Hello, Sir Ramsay. Do let us pass. We've brought a little something for Sir Patrick. Probably come to try to beg his way in again. Do they always talk to you like that? Ah, all in good fun. But once Sir Patrick lets me join the Headless Hunt, I'll be right there with them. This offering is sure to win him over. Don't forget why I'm here, sir. Rest assured, you'll have your information from young Jackdaw in no time. Wherever he may be. What I'd give for a flagon of mead or a nice leg of lamb right about now. Then this party would be complete. How about the next best thing, Sir Patrick? Ah, Sir Nicholas. And a student. Who let you in? We brought you a gift. This is all very suspicious. What do you really want? As if I need to ask. It's Richard Jackdaw. Where can we find him? May we speak to him? Jackdaw, eh? Why, here he is now. What a shame. Without his head. I bet you've always wondered what that's like, eh, Nick? Sir, you jest. It's bound to be around here somewhere. Probably being used in a game. If you find it, I give you my permission to speak with him, my young mortal. It's the least I can do for you for bringing this putrescent gift home. Sir, there's another matter I wish to discuss with you, if I may. Tut, tut, Sir Nicholas. How many times do I have to tell you? Our entry requirements are quite clear. But, sir, we aren't the headless except for a little bit of tendon hunt, after all. Now, please, follow me, and I shall help you find your way out. Farewell, my young friend. Perhaps your luck with these chaps will be better than mine. How do ghosts with their heads while away the afterlife? ये कोई कब्रिस्तान लग रहा है, जैसे कोई कब्रिस्तान में लेकर आ गया हमें। Revelio. और क्या कहते हैं, जिस काम के लिए आए थे वो अभी तक तो हुआ नहीं है, तो चलो देखते हैं। और ये क्या है, कोई मैप मिला है, इसमें हमें अपने वो लाइट वाला स्पेल यूज़ करके और इस एरो को फॉलो करते हुए इस मोमबत्तियों के पास कहीं हमें कुछ मिलेगा। तो चेक करते हैं, अगर ये मिल गया तो सही है, क्लिक कर लेंगे। नहीं मिला तो हम आगे अपना टास्क कर लेंगे, जैसे चला के देख लेते हैं। इसके लिए हमें कहाँ से जाना है? चलो Lumos. इधर कहीं बता रहा था ना, ये गेट के पास।
चलो अभी इतनी तो लाइट है कि हम उसको बगैर Who लाइट will के be भी हमें next दिख to play our जाएगा। little game of hide and seek amongst the pumpkins? बात करते हैं भाई इनसे, क्या पता ये हमारी मदद कर दें। Hello again. Can you help me? Ah, Sir Nicholas's young friend. Has he abandoned you? Not at all. I need to speak to Richard Jackdaw. Sir Patrick said his head might be around here somewhere. Indeed it might be. It is a bit unorthodox to include a mortal, but if you do wish to speak with him... Oh, why not? You can speak with Jackdaw if you can find his head amongst these pumpkins. Not just once, but 5 times. Good old Dumfrey will move the head to a different spot each time you find it. Those are the rules. What say you? Why are you doing this to him? What are the rules? How did you lose your head? पहले rule Please, मालूम could you कर explain the लेना। rules again? Find his head amongst the pumpkins 5 times. Use your wand. I cannot be more specific than that. I'm game. If that's what I need to do to speak to Jackdaw, I'll do it. Marvelous! Of course, a mortal holding a wand has an advantage over us ghosts. You can simply blast away to your heart's content. Remember, the game's not over until you find him 5 times. Begin! Cast away until कोई you गेम find है him. जो हमें खेलना है और 5 दफा हमने ढूंढना है। Revelio. तो ये कोई है। Discovered already? Looks like we चलो need ये to तो find another मिल गया। pumpkin to hide in, eh, Jackdaw? Whatever you इसी say, को फॉलो करते Dumfrey. रहते हैं, क्या पता This यही is not चुप जाएं, my आगे finest बढ़ो। moment. Revelio. पम्पकिन तो बहुत रखे मैं। कौन से पम्पकिन में है ये ढूंढना है हमें। सारे पम्पकिन तोड़ दो यहाँ के, कहीं तो मिल ही जाएगा। इनसे हम बाद में बात करते हैं, इतनी बड़ी जगह पे है, कहीं ना कहीं तो छुपे होंगे। Destroy the pumpkin to find the head. Who would have thought a mortal would be so good at this? We've almost got him. Keep looking. You're sure to find और him. भी रखे हैं भैया। मजे की बात है, ये दोबारा हो गया। अच्छा ऊपर नहीं जा सकते हम इसे। It won't be long now. You'll find him. किधर हो भैया? Revelio. Polyjuice potion wants keeping away from... ये इसके ऊपर होंगे और इसके ऊपर जाने के लिए हमें कोई रास्ता देखते हैं कहाँ है। अरे पम्पकिन तोड़ दिए हमने, जो हमें रास्ते में मिल रहा है। A student is playing. Revelio. किधर हो भाई साहब? I've never seen it played like this. How delightful. Levioso. Accio. अभी इतना बड़ा मैप में उन्होंने कहीं छुप के बैठे हुए हैं, वो ये रहे। So you found us. This ain't over yet. ये रहा, मिल गया। 2 हो गए। इसी को फॉलो करते रहो, पता चल जाएगा कहाँ जा रहा है। I could do that too if I had a wand and a body. पर जाने की जगह ये दिखा तो रहा है, मगर कहाँ से जाना है ये अभी तक नहीं पता चला। Oh, what fun! A student is playing. I've never seen it played like this. How delightful. भाई कहाँ पम्पकिन के अंदर, तो कद्दू के अंदर घुसा हुआ है, कद्दू घुसा हुआ है तो कद्दू से बाहर निकल भाई। A student is playing. कद्दू तोड़ने थोड़ी आए हैं। I've never seen it played like this. How delightful. Revelio.
3 दफा और ढूंढना है उन भाई साहब को जो थे, फिर ये आगे का हमारे कुछ जर्नी शुरू होगी। Who would have thought a mortal would be so good at this? You've almost got him. किधर हो भैया? Oh, what fun! A student is playing. कहाँ हो? ना दूर से देखते हैं, क्या पता हमें दिख जाए। And then I won't be the one to clean up this mess. जितने भी पंपकिन थे सब तोड़ दिए हैं, बस मिल नहीं रहा हमें वो। Revelio. ये रहा, ये रहा। Oh, what fun! A student is playing. हाँ चलो भाई चलो, फिर ढूंढो इनको। अब कहाँ चले? I've never seen it played like this. Is it over yet? सिटी में इन्हीं के करीब है। वो रहा। बस फॉलो करो, मिल जाएगा। ये ज़्यादा सही है ना। Who would have thought a mortal would be so good at this? You've almost got him. Well done. Of course, having a wand. चलो हो गए हमारे 5 दफा। Still, I believe congratulations are in order. Not too bad for a mortal. Now, say what you need to say to old Jackdaw here, hmm? You've earned it. Nicely done. But what's going on? You're not a member of the Headless Hunt. No, I'm not. Sir Nicholas said you might know the location of some pages I'm looking for. Merlin's beard. I know precisely the ones you mean. I pinched them from Peeves. How could I forget? The map on those pages led me to my demise. I was not ready for what awaited me in that cave. The pages are likely still mouldering away with my, remains. Quite a final adventure, I must confess. The pages are why you lost your head, and I must visit a cave and search for your corpse. Yes. You'd think a decapitated ghost would get used to the word corpse. Say, here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to go? What in the cave? What will I find in the cave? Aside from my mortal remains? If I remember correctly, some treasures, a magical bridge. But what kind of an adventure would it be if I spoiled the surprises for you? Who cut off your head? How did you steal from the... चलो ये सब छोड़ो और well... I need those pages, so I suppose I'd better meet you. Thank you. Not to worry. I'll just need to be reunited with my body first. But Dumfries can handle that. See you at the forest's edge. चलो हमारा ये टास्क भी कंप्लीट हो गया है। आज देख लेते हैं और कौन से हमें टास्क हैं आगे हमारे पास। ये हमारा बाहर का हिस्सा है। ये मेरे ख्याल से कब्रिस्तान टाइप की कोई जगह है जहाँ पे ये सारे कोस वोस रहते हैं। देख लेते हैं कोई हमारे पास टास्क आया हुआ है। एक ये टास्क आया हुआ है और एक ये हमें मिला हुआ है। और भी कुछ हमें चीज़ें मिली हुई, गियर जैसे अपग्रेड करने का मिला हुआ है। हम गियर अपग्रेड कर लेते हैं अपना। अच्छा गियर हम इस्तेमाल करेंगे जो हमें ज़्यादा पावर दें। ओके, 2 और हैं जो कि अभी लॉक्ड हैं। एक तो हमारा बूम लॉक है और ये है। अच्छा जी, चलो हम बैक करते हैं। I need to learn the disarming the charm before I can follow the regenerative goes into the forfeit forest. चलो अभी के लिए इतना ही।
ये आज का पार्ट हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम भूतों से मिलने के बाद हम यहाँ पर ना पार्ट ख़त्म करते हैं। आगे भी भूत का टास्क है जो कि हमें पेजेस के बारे में बताएगा, तो उसके लिए आपको अगले पार्ट तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आपको कैसा लगा ये आज का एपिसोड? आज का थोड़ा सा छोटा बना है, तो कोई बात नहीं, अगली दफ़ा हम अच्छे और अच्छा बना लेंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करेगा, चैनल को लाइक करेगा और कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि गेम कैसा लग रहा है आपको। मुझको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।